Good evening, friends. Welcome to Ray Sports Cricket English Live show. And now we are with our cricket expert Shandipan Banerjee, and Shandipanda is here to analysis about tomorrow's match because we know tomorrow India have a match against Netherlands, and it will be the last match of this group stage of World Cup, and then India will play at the knockout because we know now all the four teams have qualified for the semi-final because New Zealand will face India. India will face against New Zealand. So we will come about this matter. We will come to talk with about this matter. But all the spectators, all the audience of Race Sports are welcome today in this live show, and you can all ask questions about tomorrow's match, and we will discuss about this matter. Shanibanda, tomorrow India will face Netherlands in their last group stage match of this World Cup. So, what do you think? India will make any changes in this match in playing 11? So, what will you thought? Yes, India will be playing their last league game of this World Cup. They are the only unbeaten team of this tournament. 8 out of 8 matches they have won. And Bangalore, of course, Virat Kohli's home territory, adapted home, as we all say. Small ground, possibility of a high scoring match if India bats first. If you talk about the possible changes in the 11, we asked this question to Rahul Dravid in the press conference, but the kind of reply we got from his whatever we got from Rahul Dravid is that bowlers are not willing to take rest because the team is now having a momentum and they want to carry this momentum into the semi-final, so they don't want to break the momentum. But I think logically, if you think, I think ideally someone like Bumrah or maybe Siraj should take rest for tomorrow's game, and someone like Prashid Krishna, who is a local boy here, and he can come in. Sardul Thakur can come in, so that before the first semi-final, which will be played at the Wankhede Stadium on the 15th, India will have their first choice bowling attack fresh because Bumrah and Shami, they have played all the 8 matches, and if they play, if they get one match rest, I think it will be ideal. But this team is thinking positively. They are not looking to take this. If you The environment inside the dressing room is that they are not looking to take any rest or whatsoever. They just want to go out there, perform, do their job, and focus on the next match. So that is the attitude so far in this team. So I won't be very surprised if India go ahead with their first choice bowling attack. But ideally, if you ask me, I think someone like Prasidh Krishna and Shardul Thakur should come in for tomorrow's game to give a much needed rest to someone like Bumrah and Siraj. Okay, okay. Shandibanda, whatever Shandibanda told that India is very much focused for tomorrow's match. Shandibanda, one thing we know that tomorrow's match is not so much important for India because India has already qualified and India is looking for semi-final now. So, what will be India team's focus point for tomorrow's match? Tomorrow's match is important. It's a World Cup we are talking about. We cannot take, be complacent in any of the games. Um, it is Cricket is all about momentum, and winning is a habit. So if you lose that momentum, that can have an effect in the team as well. I can remember I was covering the 2019 World Cup in the UK. India were unbeaten in their first 5 games. Then they came across England. They lost that game. Next match against Bangladesh, they were a little bit iffy. The game went close. I guess Afghanistan also the game went close, and going into the semi-final, India did not have the momentum. They had some injury issues also. Shikhar Dhawan was not there. Rishabh Pant had to come in for the semis. So, but they lost their momentum while going into that semi-final. I think this time they don't want to make the same mistake against the same opponent. So I think this time they are looking much more circumspect, and I think this time I think they will be better prepared for the semis. So, but talking about being easy game or so, I don't think any game is easy. And Netherlands they have played a very good cricket so far. It's a small ground. Anything can happen. We have seen
on this particular venue, Ireland have beaten England in the 2011 World Right. Cup. So anything can happen. Cricket is the game of uncertainties. We have seen multiple times in this World Cup. Whatever. So I don't think the Indian team will be complacent. Exactly. India will definitely India will look for 9 out of 9 in this match against Netherlands. One more thing, Shandibanda. Virat Kohli is standing in the brink of his world record. He can, if he can score another centuries tomorrow's match, he will make the world record and he will cross legendary cricketer Sachin Tendulkar. So tomorrow the match in his Chinnaswamy, and it is almost like Virat Kohli's home ground. So do you think Virat Kohli's so much advantage tomorrow to make the century, to score the century? Well, he knows these conditions like better than anyone, and I think if you look at Virat Kohli's record at this particular venue, of course he plays for the Royal Challengers Bangalore, RCB. The local crowd will of course go behind, will cheer for him. Ideal condition. I think wicket will be very much batting friendly. Ball will come into the bat, and in at Chinnaswamy, if you connect the ball, it will go into the stands. It's a small ground. So yeah, of course, it's an ideal opportunity to for Virat Kohli to get the milestone, get the pressure off his shoulder going before the semi-final. Okay, thank you, Shadwara. So Okay, I we think have some. Okay, okay. So we have some questions from our audience. So we will take the questions. First question is from Shantanu Roy. He's asking that semi-final में कैसा pitch रहेगा, Shandibanda? Shandibanda, you are muted. Please unmute your audio. ओ सॉरी सो मैं जो कह रहा था कि जो What? पिच होगा यहाँ पर बैंगलोर का, इट इज यूजुअली एज यूजुअल जैसा यहाँ पर पिच होता है, हम देखते हैं आईपीएल में भी इंटरनेशनल में भी. It will be a high scoring wicket. Ball will come into the bat. Expect a high scoring game, and I expect I hope that India will bat first tomorrow. अगर इंडिया बैट फर्स्ट करता है तो फिर कुछ रिकॉर्ड्स भी पिच आई बिलीव. ओके ओके, थैंक यू सो मच. और एक क्वेश्चन है, इट्स प्रणब क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि लास्ट कुछ आईसीसी इवेंट में इंडिया का नॉकआउट रिजल्ट एकदम ठीक नहीं है, ऐसा करता हो इस बार सब नहीं होगा और 19 को हम चैंपियन होंगे. Yes, of course. Knockout results we haven't had the kind of results we were expected in the last few knockout tournament, quite a few tournaments. But this time जो है मुझे जो लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टेंसेस है, यहाँ पर इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है. आई थिंक बट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. वी ऑल नो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज. बट जैसा कंडीशन लग रहा है, जैसे इस टीम में जो जैसा फॉर्म दिख रहा है, it's going to be very tough for any of the opponents to beat India. But semi-final वानखेड़े में it is going to be a tricky game for the Indian team. क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, the Indian batters play counter-attacking, do counter-attacking batting against the new ball. और न्यूजीलैंड का जो स्ट्रेंथ है वो भी उनका न्यू बॉल अटैक है. ट्रेंड बोल्ट, टीम साउदी, तो they will also go for wicket, और Indian batters will also look for runs. अगर आपको पता ही है कि जब when you are playing attacking cricket, विकेट का भी चांस बनता है वहां से, स्पेशली इफ द बॉल इज मूविंग. और वानखेड़े में हमने देखा है कि स्पेशली अंडर लाइट्स जो है न्यू बॉल बहुत मूव किया है, विकेट्स भी मिले हैं बॉलर्स को न्यू बॉल से. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा बैटल होगा. आई थिंक द यूएसपी ऑफ द गेम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फेट ऑफ द मैच will be decided by this battle, like whether the New Zealand new ball attack is whether they are having the upper hand against the Indian counter attacking top order batters. ओके, थैंक यू शंदिबंदा. एस मुखर्जी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि काल क्या हम लोग अश्विन को देख सकता है? I don't think so.
मुझे नहीं लग रहा कि इसे स्मॉल ग्राउंड में ऐसे बैटिंग विकेट में अश्विन को कल मौका मिलने का मौका मिलेगा, बट यू नेवर नो. बट इफ यू आस्क मी रियलिस्टिकली, आई कांट सी अश्विन कमिंग इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द स्पिनर्स. आप जडेजा को ड्रॉप नहीं कर सकते, ही इज योर ओनली ऑलराउंडर इन द 11. और कुलदीप जैसे बॉलिंग कर रहा है एट दिस पॉइंट, उनको ड्रॉप करना भी उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं होगा. तो मुझे नहीं लग रहा है कि अश्विन को मौका मिलेगा कल, अनटिल अनलेस के कोई इंजरी, लास्ट मोमेंट इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए. एग्जैक्टली. संदीप, वन मोर थिंग, सेमीफाइनल में इंडिया के सामने हो रहा है न्यूजीलैंड का. तो अगला वर्ल्ड कप में 2019 में भी ऐसा ही सेमीफाइनल था, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, और उस गेम में इंडिया ने हार गया था सेमीफाइनल में आके. तो अभी जो सेमीफाइनल आ रहा है 15 तारीख में, उस सेमीफाइनल में आपको क्या लग रहा है? ये बदला का मैच होगा इंडिया के सामने? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट जो है इसमें ये बदला और ये जो है, ये एक्चुअली दिस टर्म्स आर ये मीडिया के द्वारा क्रिएट किया जाता है हाइप होने बढ़ाने के लिए. आई डोंट थिंक द प्लेयर्स थिंक ऑन दीज लाइंस. They फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स इट्स जस्ट अनदर गेम. ओके. तो शनिबंदा, और एक चीज, सेमीफाइनल में इंडिया के सामने न्यूजीलैंड है, तो फाइनल में पहुंचना कितना टफ हो सकता है इंडिया के लिए? नहीं, एनी ओपोनेंट, देखिए कोई भी, अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का आप बात करेंगे तो कोई भी ओपोनेंट आपके लिए बहुत कांटे का टक्कर होगा. सेमीफाइनल इट्स डू और डाई गेम, वन ऑफ अपॉर्चुनिटी. आप पिछले 9 मैच में जो भी करे हो उसको भूल जाओ आप. सेमीफाइनल इट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट. कुछ भी हो सकता है. जब मैं कह रहा था आपको, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन अगर इंडिया लाइक 20 for 4 हो जाए अगेंस्ट द न्यू बॉल, और फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक दे आर चेजिंग मे बी 280 और सो, वहां पर 20 for 4 हो गया, जैसे हमने मैनचेस्टर में हमारे साथ हुआ था. तो मुझे देखिए, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट सेमीफाइनल. किसी ने नहीं सोचा था कि इस टूर्नामेंट में जो है नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा या अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा. तो क्रिकेट में कुछ भी आप प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, स्पेशली जब आप सेमीफाइनल का बात करते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड है ऑल्सो प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला है उन्होंने. हालांकि बीच में बहुत सारे मैचेस हारे हैं, लेकिन क्लोज जाके हारे हैं वो मैचेस. तो न्यूजीलैंड को भी आप काउंट आउट नहीं कर सकते. केन विलियमसन फिट है उनके, अभी केन विलियमसन इज स्कोरिंग रन्स. टीम साउदी वापस आ गए हैं. तो द न्यूजीलैंड टीम इज लुकिंग लाइक ए वेरी बैलेंस्ड यूनिट, वेरी वेरी बैलेंस्ड यूनिट. और छोटा ग्राउंड है वानखेड़े, वहां पर भी छोटा ग्राउंड है, ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बहुत रहता है. देखिए हमने मैक्सवेल का इनिंग्स हमने देखा उसी ग्राउंड पे, 91 के पर 7 हो जाने के बाद भी जो है 292 चेज हो गया वहां पर. तो वानखेड़े छोटा ग्राउंड है, वहां पर कुछ भी हो सकता है. एक दो बैट्समैन जो है गेम चेंज कर सकते हैं. तो यू कैन नेवर आप कुछ अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ओके. लास्ट में जो हम आपको पूछना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान खेल रहा है, इंग्लैंड के विरुद्ध खेल रहा है, लेकिन बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैन चाह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच सेमीफाइनल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के सामने जो टारगेट था, उनका जो टारगेट था, वो नामुमकिन सा टारगेट था. तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? नहीं, पाकिस्तान आज के मैच से पहले मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वर वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट. देखिए उन्होंने ऐसा कुछ इम्प्रेसिव क्रिकेट तो खेला नहीं है, तो यू कैन नॉट काउंट आउट ऑन अदर टीम्स, योर फेट ऑन अदर टीम्स, कि अदर वो टीम उसको हरा दे, ये टीम इसको हरा दे, ऐसा कर दे. आपने अच्छा क्रिकेट खेला नहीं है. पाकिस्तान का टीम का मुझे जो प्रॉब्लम दिख रहा है इस टूर्नामेंट में, लाइक रिसेंट पास्ट में भी, हालांकि वो नंबर 1 टीम भी रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दे आर वेरी कंजर्वेटिव. उनका जो वनडे क्रिकेट में खेलने का अप्रोच है बहुत ही पुराने जमाने का, जैसे 90s में, अर्ली 2000 में हम देखते थे कि 270-80 बनाओ, उसको डिफेंड करो. ऐसा अप्रोच आजकल नहीं चलता है. आप देखिए, लुक एट द इंडियन टीम, द वे दे हैव प्लेड, the way they have counter attacked the new ball, the way they have in the middle orders they are scoring runs in a high scoring matches हो रहे हैं यहाँ पर. जैसे इंडिया बॉलिंग कर रहा है, अटैकिंग बॉलिंग कर रहा है, तो इस पाकिस्तान टीम में स्पेशली बैटिंग में तो इनके पास वो अटैकिंग बैट्समैन
बैटर्स ज्यादा है नहीं, सा एक फकर जमान है और मे बी इफ्तिकार। बॉलिंग में भी नसीम शाह का ना रहना उनके लिए बहुत बड़ा एक आई थिंक बहुत बड़ा झटका रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आस्क मी, सम ऑफ देयर बॉलर्स आल्सो लैक द स्किल्स ऑफ बॉलिंग ऑन दीज हाई स्कोरिंग पिचेस। जो पाकिस्तान ज्यादा देखिए आपका उनका अगर सक्सेस देखेंगे तो ऐसे विकेट्स में रहा है जहां पर बॉलर्स को थोड़ा मदद मिलता है, लेकिन ऐसे इंडियन कंडीशन में जहां पर यहाँ पर ड्यू फैक्टर भी ज्यादा रहता है और बॉल बहुत अच्छी तरीके से बैट में आता है, यहाँ पर इनके बॉलर्स के पास वो स्किल्स नहीं है, उतने वेराइटीज नहीं है कि यहाँ पे जो है बैटर्स को कंट्रोल कर सके। उनका स्पिन अटैक भी बहुत ही ऑर्डिनरी स्पिन अटैक लेके आए थे इस वर्ल्ड कप में। तो ओवरऑल जो है ऐसे टीम में अगर आप लेके आएंगे तो फिर परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं लग रहा है कि, मैं एक्चुअली पाकिस्तान को मान भी नहीं रहा था वन ऑफ द सेमीफाइनल कॉन्टेंडर्स। तो आई एम नॉट ओके, थैंक यू सो मच शांतिबंदा। आज का लाइव शो हम यहाँ पे ही हम एंड करेंगे, और काल का जो मैच है नेदरलैंड्स के विरुद्ध में, उसके ऊपर तो हम सभी नजर रखेंगे। और रेस स्पोर्ट्स तो है ही इंडिया के मैच को एनालिसिस लेके, और आज रात में भी बंगाली लाइव भी है रेस स्पोर्ट्स का जो लाइव शो होता है। तो अभी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और शांतिबंदा थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। नमस्कार, थैंक यू।